and focal persons from various universities in Punjab. Thank you very much for joining on this important session pertaining to the digital platform that PHEC is developing. And this assignment may not be successful without your support and participation. Ladies and gentlemen, as we all know that digital platform has become very important and critical in modern times, and also the challenges that we are facing in this COVID-19. And all our institutions are on use of education technology at different level. And we have to see that how best we can bring in the capacity of our institutions and also the competency that is required from various institutions in order to ensure that the academic sessions will continue. At the same time, we would like to see that the important data that is available with various institutions is readily available for planning, for strategic planning from the perspective of analysis, evaluation, and what is the way forward. So from that perspective, this Rahnumai Markaz portal of PHEC is going to provide different levels of engagement to the faculty members, to the institutions, to the senior officers, and then also helping the students in various forms, primarily in admissions, when they would like to apply for various institutions, what are the opportunities available. So I think one click should allow them to see that what kind of options are available for them. Then scholarships which are available for any student for higher education, national, international, local, funded by various agencies, government, etc. So that's another important element. And then we need to look at various element of academic programs, admission cycle, and what kind of program a university is providing. And then we have to see that this data is available for analysis. So from that perspective, this training session, which is going to be introductory and more on awareness, our colleagues from PHEC and also from PITB, with whom we are working with for the development of this portal, will provide opportunities to all the focal persons so that you can upload your information, your data in this portal, and that should be available to you and also to the government for various assessment, evaluation, and future planning. This portal is supported by the Government of Punjab Higher Education Department and has a special patronage of Minister for Higher Education. And maybe in a few weeks' time, we are going to have a session and invite the Minister to highlight the government's initiative and the importance of this portal in Punjab at higher education level. So from that perspective, I'm sure that the employability and different kind of jobs, career counseling, and stress management coming from various aspects, where we are going to have 36 centers, one in each district. And they are going to provide kind of helpline counseling services to the students to discuss academic matters, some social issues and pressures, and what are the government policies and how best they can be guided for the challenges and the issues they are facing, and what are the possible solutions for that. So from that perspective, I'm sure that this portal with a lot of information coming from our institutions will be very helpful. We are also going to put information pertaining to ORIC, the strength of the university, QEC data, so that when institutions would like to apply for ranking at national, international level, that should also be available, so that funding and recognition coming from various levels of engagement can be ensured. So once again, thank you very much for joining on this awareness session, which is going to be conducted by our officers. And I would request Nadia and other colleagues to kindly take over and continue with the session. Thank you so very much, and your help is definitely needed. And whatever support you expect from PHEC,
at different levels. We would be very happy to do that. Although there are a lot of constraints in terms of budget and finance, but there are a lot of things which we can which we can deal with and cooperate through better interaction and supporting each other. Thank you very much, and may God bless. Nadia, over to you, please. Thank you, sir. Thank you so much for briefing on Rahnumai Markaz. Dear participants, now we're going to switch to the actual portal. We're going to show you the portal, and we will give you the overview of how it's going to work. And let's start with it. With me is Hamza Salman. He is project manager on this project. I'd like him to start over. Thank you very much, Nadia. I'll just start by sharing the screen. Can everybody view the screen I'm sharing? Yes, we can. Okay, yes, it is. पहले आप लोग अपने URLs में अपने वेब ब्राउजर्स में rehnumai.punjab.gov.pk लिखेंगे. I'll just share the link on the message for your assistance. Everybody must have typed in the shared URL. ये आपको लेके आएगा रहनुमाई मरकज के होम पेज के ऊपर. As everybody can see, we've got a menu on the left side, and then we've got the categories below the picture slider. On the header, we'll start with the header. The header gives you the information where actual Rahnumai Markaz would be hosted. And this list is sorted division-wise. If you bring the cursor on Bahawalpur and click on it, you'll get the list of universities which come under Bahawalpur division. Again, each university is... sorry for interrupting. Kindly screen dobara share kar le. Screen is not visible. Hold on. Just let me have a look at the screen. I hope everybody can have a look at the screen now. Okay, this is the URL, rehnumai.punjab.gov.pk. After entering the URL, you will be brought on the screen. I'll start with the header. On the header, we've got the list of 36 universities where Rahnumai Markaz would be physically hosted. All these 36 universities have been sorted division-wise. Each university is showing the link to their website, their Google Map location, and a booking and appointment module. We'll be coming to the book and appointment module in a jiff. Now I'll start explaining the categories of information that has been categorized on Rahnumai Markaz. First of all, we'll go into the admissions and programs section. In the admissions and programs section, we've given a list of total universities operating in Punjab. We've given the user 4 views for these universities, division-wise, district-wise, tehsil-wise, and city-wise. Let's have a look at the list of universities sorted by division. All universities working in Punjab have further been categorized under public and private categories. Their links are hyperlinked with their respective university websites and their locations
as all of you can see that they're linked with their Google Map locations. All of you can click on whichever university you want, and they'll take you, the university name would take you to the respective university's website, and the location link would take you to the Google Map location. Now let's come to the list of universities by district. We've got the same list of universities, but this time this is sorted by district, by their respective districts. I'll just quickly skim through it. Just click on randomly on a single university just to show how it's working. Under this tab, we've given another list of colleges, total list of colleges operating in Punjab, again recognized by the Punjab government. By clicking here, you'll be routed to a web page with all the details of public colleges working in Punjab. From here, you can have their telephone numbers, prospectus, you can view their programs, their deadlines of admissions, their merit lists, and etc. Yellow Irish. We'll come back to the admissions and programs section now. You'll see another category of free online courses. Under this category, we've entered various portals that are providing around free online programs and capacity building trainings to students seeking higher education, professional programs. Most of you must be knowing these. Harvard is offering a number of programs. PHEC is offering certain trainings for universities and colleges of public sector. Again, Asian Development Bank is offering some programs, Udemy, edX, DigiSkills, Coursera, Skillshare, Code Academy, and so on. These are the categories under programs and admissions section. One other feature which is linked with this section is the search of programs. The main purpose of developing this was to make a life of a student seeking higher education easy. So any students who wants to search any programs, he wants to search for a university. So he can jump on, this is a public portal, he can jump onto this portal, he'll select the university, he'll select bachelor most probably, and he wants to have a look at which universities are offering bachelor in architecture in his particular district. Let's say he's from Lahore and he wants to search universities offering BS architecture in Lahore. He'll select Lahore and he'll submit. Portal would give you a comprehensive list of all the universities offering these programs. You can have you can all see the screen as well. Further, universities are further categorized by women, co-ed, and their total stats. If you go on the view details, you'll have the entire list of universities offering the programs. Again, if a student wants to search a university offering engineering programs, he'll select bachelor. He'll go to engineering technology. He wants to select district, he can select the district. If he doesn't want to select district, it's not mandatory. He'll submit. And he'll get a entire list of universities offering engineering programs throughout Punjab.
Again, each university is linked with their Google Map location, their website, and their view details. If you just have a look at Islamia University Bahawalpur's portal page, they'll get complete details of programs being offered at their institutes. I'll come back to the home. This was all under this category. Now I'll jump to entrepreneurship. Purpose of entrepreneurship was to provide a platform where anybody who is looking to start up a business or to start up his idea, he can get information from that category. Further, the total information is further categorized as information on loans and grants. यहाँ पे हमने तमाम वो प्लेटफॉर्म्स जो स्टूडेंट लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी प्लेटफॉर्म्स को कैटेगराइज किया हुआ है. Private platforms and then government platforms. Entrepreneurship में ही हमारी दूसरी कैटेगरी है incubation and acceleration centers to facilitate new startups. Category में PHEC has organized certain webinars on research, innovation and commercialization. उसकी details दी गई हैं. Then comes the platforms जो tech startups और non-tech startups को support provide कर रहे होते हैं throughout Pakistan. For example, Plan 9 of PITB, National Incubation Center, Microsoft's Innovation Center, LUMS Center for Entrepreneurship, Tech One, Social Innovation Lab, Innovation District 92, Tech Incubator, JK Incubator. Again, now comes the list of entrepreneuring training centers. These are those platforms which provide trainings to startups on entrepreneurship. Foster Learning, MIT, Institute of Business Administration, KITE, Pakistan Society for Training and Development, ITech, Computer College, Pearl Institute of Management and IT, National Incubation Center, Coaching Academy, British Education and Training Center, and so on and so forth. The list is cumbersome. You can all skim through the list whenever you want. I'll jump on to the third category under entrepreneurship. That is guidance for starting or scaling up business. In this category, we've given the viewers the platforms which provide guidance to startups. For example, business registration portal, SMIDA pre-feasibilities, doing how to do business, International Finance Corporation, Punjab Board of Investment and Trade. Now, under these, we've given some related videos on how to get new ideas for startups, how to get ideas and test your ideas, how to run a successful startup, how to manage growth for startups, how to set KPIs and goals, because all these things are the most important things which a startup or an entrepreneur should focus on while starting up their business. I'll jump on to the fourth category, learning how to earn online through freelancing program. And considering today's environment of COVID, freelancing is selling like a hot cake these days, and everybody is wants to learn how to earn through freelancing programs. And people who've been freelancing for quite some time, they're earning quite a handsome amount of money as well. We've given the viewers some introductions on how to be an entrepreneur, given some platforms that government is providing like Hunarmand Naujawan, Kamyab Jawan Naujawan, E-Rozgar, DigiSkills, PSDF,
TSDF and Coursera have recently collaborated, and they're providing free trainings, as well as they're giving some stipends to the students as well, along with the course certifications. That was all from the entrepreneurship. Well, now I'll jump on to the main homepage and I'll go through the scholarships category. Scholarships category is further categorized under international scholarships, local scholarship, research institutes, and useful resources. I'll skim through all four one by one. Under international scholarships, we've categorized the list of scholarships as undergraduate, graduate, postgraduate, doc, and postdoc. This tab, scholarships, provides almost more than 500 scholarship opportunities throughout the world. Again, open for Pakistani students. We've given the name of the scholarship and their deadlines so that it makes it easier for the viewer to have a look if the scholarship is still open or not. Hungarian scholarship, Chinese government scholarships, King Abdulaziz scholarships, Luther scholarship, Shanghai, Holland, Nanjing, Dongua, Brunei, Korean, University of Montreal. And if we go through the list, and as I've told you, the information is targeting around more than 500 scholarships. The list is cumbersome. Next Gen, Hungarian, Erasmus Mundus, Chevening, British Council, and so on and so forth. I'll show you the list of scholarships under local scholarships. HEC need-based scholarships, SAS scholarship programs, Punjab Education Endowment Fund is offering scholarships, USAID is offering scholarships, Spreer Group of Colleges is offering scholarships, University of Central Punjab, UMT, CS scholarships, Abir scholarships, Pak Akwan scholarships, Pakistan Engineering Congress scholarships, multi-testing service scholarships, local scholarships for postgrad. Again, you'll find all these scholarships, Pakistan Petroleum Limited scholarship, fully funded MS Cheki's scholarship, PHEC's International Postdoc Scholarship Program, under the research institutes category, we've listed only those institutes that are only working on research, that are research based, that are offering research based fundings, research based scholarships, and research based grants. Includes Bahawalpur Institutes of Nuclear Medicine and Oncology, Arid Zone Research Institutes, Agriculture Research Institute, Nuclear Institute for Agriculture and Biology, NFC Institute of Engineering and Fertilizer Research, Agricultural Biotechnology Research Institute, School of Civil and Environmental Engineering, PIQC Institute, and again, the list goes on. PIAS, Pakistan Atomic Energy Commission, Nature Sugar Corps Research Institutes, Nature Physical Standard Laboratory, and so on and so forth. Now, talking about scholarships, every scholarship, for every scholarship, there are basic requirements, which includes IELTS, NTS, TOEFL, and most important of all, how to write a motivational letter, how to reach out to the professors, and how to develop a CV or a research paper. We've given links to to all of these and guidance, which is available on renowned universities, which are being followed by renowned universities while preparing these
while applying for scholarships, so that a person who comes to Rehnamai Markaz for seeking assistance or information in regards to scholarships, so that he can get a complete detail of step-by-step guide on how to apply for scholarships and which documents to review and make more critically. That was all from scholarships. Now I'll hand over the platform to Nadia. Please, Nadia, can you go through the rest of the data? So, dear participants, I am Nadia Razak. I'm Deputy Director Quality Assurance, and currently I'm the focal person on Rehnamai Markaz project. So let's continue with the training. I'm going to jump on career counseling. Let's see, what do we have here? In career counseling, we do know that students do need a lot of different kind of counseling when it comes to their career. First of all, we have focused on their academic life problems. Here are a few guiding and helping videos to help them through the semester system or the grading system, whatever the problems they are facing during their academic life. Then there is career counseling for secondary school and higher school students. The videos that we've mentioned, we've given the links over here. These are the most viewed videos, the ones that have been referred by many of the counselors. Sometimes students do face lack of motivation. We have addressed that too. Then examination stress, lack of concentration, all the problems that we can think of. And I should mention here that you are most welcome to give your feedback, whatever you think that should be included in the project. We will be using your help and your guidance to improve the portal. So these are a few counseling issues that we are guiding the students with. Then there's information on job opportunities, internships, exchange opportunities. So initially we have listed a few portals that are government portals, like Skill Punjab portal, job portal, national job portal, federal government job portal, Punjab government job portal, and then there are the private ones. In phase 2, what we're planning is, since when we'll be getting all the data from you guys of the students, of course, students will have their own logins, and what we plan on doing is that we'll link those logins with these job portals. So not only the students will be getting the subscription of whatever the job they're looking for, we'll also be having a track of employability, like how many students of your university or college are being employed. So we'll have an employability ratio as well. Here are a few guidelines on resume writing, cover letters. It has been observed that students mostly who graduate from Pakistan universities, they don't have the first idea how to write the cover letter or the resume, proper resume. We have listed a few videos, a few guidelines for them. Few documents, few sample motivation letters, some sample resumes. And here are the soft skills. Since we know that communication skill is the need of the hour, and not all the students who graduate from our university are prepared to use that skill properly. So we've also listed a few videos, a few documents to guide them in this regard. You can sure go through it in detail.
This is all about career counseling. Let's move to general awareness. So in general awareness, we have listed all the codes, the ethics that cover in the first link. They are about the disabled people, differently able, I must say, I'm sorry. So all the government policies regarding them and how we should treat them ethically, what special opportunities they have, they're all listed here. There are FAQs. If anyone doesn't know how to go by any differently able person, here are a few videos, a few guidelines to guide them in the light of law as well, in the light of ethics as well. We have covered cybercrime laws too, since they are heading to a greater number these days. What our act says about it, student must know that, what lines not to cross, and how to report if they are being a victim. These are the protection against the workplace harassment. A lot of our students not only just carry on with their academic life, they also work in parallel. So workplace harassment laws and how to deal with it, how to report them, all of that guidance is available under this platform. We've also mentioned a few educational blogs. These are regarding whatever we can think of, post-pandemic problems, how to go by to higher education online. Whatever we could think of, we have listed it here, and we do request you to give us your feedback on what more we can include to make it better. Then is booking an appointment module. I request Hamza to switch to my system and explain this module in detail. Booking appointment module is my market सबसे important module है, and this is the only module which is login based and it is not for general public. The rest of entire Rehnumai markers and the content on Rehnumai markers is for general public and is not login based. बुक एंड अपॉइंटमेंट मॉड्यूल को लॉगिन बेस्ड करने का एक सिर्फ रीजन यही थी कि जब स्टूडेंट्स अपने रिस्पेक्टिव साइकोलॉजिकल काउंसलर्स से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो देयर सर्टेन इश्यूज रिलेटेड टू साइकोसोमेटिक थिंग्स जो कि कॉन्फिडेंशियल है. तो just in order to ensure confidentiality of the counselor and the student, this module has been made login based. Every student who would be getting registered on higher education portal will be getting access to this login based feature as well. I'll just tell you how to log in. सबसे पहले हम student के login से login होंगे. अगेन स्टूडेंट के लॉगिन से लॉगिन होने के लिए हमारे पास हर स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी चाहिए थी. यूनिक आईडी के लिए हमारे पास उसका CNIC नंबर ही एक ऐसी चीज थी जो कि हर स्टूडेंट की अपनी यूनिक होगी. तो हर स्टूडेंट का CNIC नंबर जो होगा वो उसका लॉगिन होगा और उसका पासवर्ड जो है वो रिस्पेक्टिव होगा. वो हम उनके दिए गए ईमेल्स के ऊपर ऑटोमेटिकली ईमेल करवा दिया करेंगे. I'll enter through स्टूडेंट लॉगिन. ये हम स्टूडेंट लॉगिन से एंटर हुए हैं और बुक एंड अपॉइंटमेंट के मॉड्यूल पे गए हैं. दिस इज अ स्टूडेंट मोहम्मद अरसल. मोहम्मद अरसल अपॉइंटमेंट फॉर स्टूडेंट काउंसलिंग के मॉड्यूल के ऊपर गया है एंड ही वांट्स टू सेट एन अपॉइंटमेंट विद हिज रिस्पेक्टिव स्टूडेंट काउंसलर. इमरान शरीफ चौधरी इज हिज स्टूडेंट काउंसलर और प्रीवियस स्लॉट्स उसके पास आ रही हैं कि संडे में या पिछले 20th को ही
sent a message to his counselor that, sir, I want to seek appointment for discussing my anxiety issues. जैसा कि आप सारे देख सकते हैं कि नीचे उसके पास सारे स्लॉट्स अवेलेबल आ रहे हैं रिस्पेक्टिव स्टूडेंट काउंसलर के, और स्टूडेंट जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी एक स्लॉट जो कि बुक करना चाहे वो एक स्लॉट बुक कर लेता है. ये उसने एक स्लॉट अपना बुक किया है और यही इसकी इंटीमेशन उसके रिस्पेक्टिव काउंसलर इमरान शरीफ चौधरी के पास चली गई. नाउ आई लॉग आउट फ्रॉम द स्टूडेंट login and I'll log in from the counselor's login. जी, ये काउंसलर ने अपने लॉगिन से लॉगिन किया है और वो बुक एंड अपॉइंटमेंट के मॉड्यूल पे जाएंगे. इमरान शरीफ चौधरी इज द स्टूडेंट काउंसलर. और यहाँ पे उनके पास रिक्वेस्ट शो हो रही है कि मोहम्मद अरसल हैज रिक्वेस्टेड अ टाइम फॉर स्टूडेंट फॉर अपॉइंटमेंट. नाउ इट्स अप टू दिस काउंसलर के वो स्टूडेंट के इशू को देखते हुए इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट सेट करना चाहते हैं या वो ग्रुप अपॉइंटमेंट सेट करना चाहते हैं. बहुत सारे इश्यूज ऐसे होंगे जो इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट जिनके लिए दरकार होगी, और बहुत सारे इश्यूज ऐसे होंगे जहाँ पे 4 या 5 स्टूडेंट्स को काउंसलर जो है वो क्लब करके एक ग्रुप के फॉर्म में भी उनको काउंसलिंग दे सकते हैं. तो अंडर दिस मॉड्यूल वी गिवन द काउंसलर द एक्सेस टू बोथ types of counseling, group counseling and individual counseling. यहाँ पे काउंसलर कोई भी अपने कमेंट्स ऐड करेगा. You can meet me in my office at the given time. और will save change. The message once slot updated उसके पास आ जाएगा और मोहम्मद अरसल के पास मैसेज चला जाएगा. अब मैं आपको मोहम्मद अरसल के लॉगिन से लॉगिन होकर इमरान शरीफ चौधरी का लॉगिन दिखा देता हूँ. You can see कि काउंसलर ने जो मैसेज किया है वो स्टूडेंट को व्यू हो रहा है. That was all for रहनुमाई. स्टूडेंट अगर स्टूडेंट की कोई इमरजेंसी मेकअप क्लास आ गई है तो he has the right to do to cancel the booking and book another appointment according to his schedule. The same cancel booking feature is also available for the counselor in case कोई उनकी prior commitment आ जाती है. That was all for Rehnumai Markaz. On the home page, we've got highlights for Rehnumai Markaz, news and announcements में जो recent हमारी most recent scholarships होती हैं उनकी details आ रही होती हैं. Each scholarship is linked with their respective URLs जहाँ से वो provide करते हैं. Footers में हमारे पास free online education portals available हैं जहाँ पे लोग जा सकते हैं. Social media links for Punjab Higher Education Commission, and that's it. Achha, this was one portal, most important portal. Now we'll move on to the second portal जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बारे में कुछ नादिया आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे, and then I'll walk you through the higher education portal as well. So the participants, I'd like to mention one thing here that this Rehnumai portal is a public portal. It's one-stop solution for students for their guidance. There's another one that is higher education portal, that is administrative portal. We will be giving you logins. Your particular dashboard will be there.
we want you guys to enter all the data from your universities regarding students, faculty, PhD programs, and whatever is listed in that portal. We'll be showing you all the portal in a bit. So why we are training you is because we want you to please add all that data in the portal that we're going to explain now. List of programs, students, all this information will be coming from that portal. So it is very important if you're having that training, whatever the questions you have, do add it to the chat box, and we'll be addressing all the questions you'll be asking from us. And please do pay attention to how to go by each and every detail in this higher education portal. Hamza will be explaining the portal now. Thank you very much, Nadia. First of all, हम अपने ब्राउजर में hep.punjab.gov.pk लिखेंगे और एंटर करेंगे. I hope सारों ने एंटर कर लिया होगा. I would request everybody to enter username admin and password admin 123. I'll be sharing the link with you as well, with every one of you. Log in the chat box. सब लोग जब इस लॉगिन पेज के ऊपर आ जाएंगे तो आप यूजर नेम में एडमिन और पासवर्ड में एडमिन 123 लिख के सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे. आप एक गेस्ट यूनिवर्सिटी जो हमने ट्रेनिंग पर्पस के लिए क्रिएट की है उस पे उसके होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे. एज यू कैन सी कि होम पेज के ऊपर सर्टेन बाइफिकेशंस आ रही हैं, ग्राफ्स की चीजें अवेलेबल हैं. अगेन ये हायर एजुकेशन पोर्टल वुड गेट बेटर एंड बेटर जब आपका डाटा आना शुरू हो जाएगा. व्यू प्रोग्राम्स के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में दिए गए तमाम जो प्रोग्राम्स हैं, लिस्टेड प्रोग्राम्स, आप वो व्यू कर सकते हैं. और मैं तमाम colleagues से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि as soon as you receive your respective logins, आप अपने रिस्पेक्टिव लॉगिन्स को लॉगिन करें और अपनी यूनिवर्सिटी के व्यू प्रोग्राम्स में जाके अपने तमाम प्रोग्राम्स को एक अच्छी तरह से व्यू कर लें. In case of any query, you can always get back to us. We'll be sharing a support email as well. इसके ऊपर आप अपनी तमाम तर क्वेरीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने होम पेज दिखाया जिस पे बेसिक इंफॉर्मेशन आ रही है. उसके बाद मैं आपको स्टैटिस्टिकल प्रोफाइलिंग के पेज के ऊपर लेके जाऊंगा. स्टैटिस्टिकल प्रोफाइलिंग में आप सारों को नजर आ रहा होगा कि we've given five different links: details of main campus, details of post and positions, faculty information, students enrollment, and upload images. Details of main campus. यूजरनेम किसी को अगर लॉगिन करने में कोई इशू आ रहा है तो यूजरनेम इज एडमिन एंड आई एम जस्ट लेट मी टाइप द यूजरनेम. यूजरनेम I've shared the username and password for the participants, for everybody. Details of main campus पे आप आएंगे तो edit detail की आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा. Edit detail में you can, every field is editable except the name of the university.
آپ اپنی رسپیکٹو وائس چانسلر کا نام, اسٹوڈنٹ پاپولیشن, کرنٹ ایئر HEC رینکنگ, ایڈریس آف مین کیمپس, سب کیمپس اف اینی, ٹیلیفون نمبرز, فیکس نمبرز, ویب سائٹس, ایفیلیٹڈ کالجز اگین اف اینی, وہ آپ انٹر کریں گے اور سبمٹ کا بٹن دبائیں گے. یہ ساری ڈیٹیل آپ کے ہوم پیج کے اوپر جو شو ہو رہی ہے اپڈیٹ ہو جائے گی. اب میں آپ کو لے کے جاؤں گا اسٹوڈنٹ رجسٹریشن کے پورٹل کے اوپر, جو کہ بہت امپورٹنٹ پورٹل ہے. ایکٹیو اسٹوڈنٹس کسی بھی یونیورسٹی میں 4 سال کے ہوتے ہیں, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر. فرسٹ ایئر فرسٹ 2 سیمسٹر سسٹم کی اگر ہم بات کریں, سیکنڈ ایئر تھرڈ اینڈ فورتھ, تھرڈ ایئر ففتھ اینڈ سکس, اینڈ فورتھ ایئر سیونتھ اینڈ ایٹھ سیمسٹر اسٹوڈنٹس. ہاؤ ٹو رجسٹر already enrolled students in certain programs. سب سے پہلے آپ اسٹوڈنٹ رجسٹریشن کے پورٹل کے اوپر آئیں گے اور ایڈ اسٹوڈنٹ کا بٹن کلک کریں. ایڈ اسٹوڈنٹ کے بٹن کو کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ایک پیج اوپن ہو جائے گا. یہاں پہ آپ بیچلر کو سلیکٹ کریں گے. لسٹڈ پروگرامز میں سے آپ کے آرٹس آنرز کا فرسٹ شفٹ سوشیولوجی ہے اگر, تو اس کو آپ سلیکٹ کریں گے, اسٹوڈنٹ کی رسپیکٹو کلاس کو سلیکٹ کریں گے اور نیکسٹ کا بٹن دبائیں گے. آپ کے پاس یہ فارم اوپن ہو جائے گا. اس فارم میں آپ نے اسٹوڈنٹ کا بورڈ سلیکٹ کرنا ہے, اس کا انٹر کا رول نمبر سلیکٹ کرنا ہے, اس کا پاسنگ ایئر سلیکٹ کرنا ہے, اور ایک چیز آپ اور سلیکٹ کریں گے کہ اس کا سیشن اینوئل تھا یا سپلیمنٹری تھا. آپ جیسے یہ 4 چیزیں انٹر کریں گے تو HEP پورٹل آلریڈی اپنے ڈیٹا بیس سے پنجاب کے تمام بورڈ سے پاس شدہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا ڈیٹا آٹو فل کر دے گا, جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی یہ آٹو فل ہو چکا ہے. آپ ڈیٹا کو گو تھرو کریں, جو فیلڈز مس ہو گئی ہیں ان کو مینولی فل کر لیں. اسٹوڈنٹ کا کانٹیکٹ نمبر دے دیں, اور آپ سبمٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کا اسٹوڈنٹ انرول ہو جائے گا. سملرلی اگر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ آتا ہے جس نے پنجاب کے کسی بورڈ سے انٹر یا میٹرک نہیں کیا ہوا اور وہ فیڈرل بورڈ یا کسی اور بورڈ سے اپنا میٹرک انٹر کلیئر کر کے آیا ہے, تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے کوئک انرولمنٹ کا ایک فیچر پورٹل میں ڈالا ہے, جس میں اسٹوڈنٹ کا نام آئے گا, اسٹوڈنٹ کا ای میل. اگین ایک چیز میں یہاں پہ فوکس کرنا چاہوں گا, آپ ساروں کا فوکس لانا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹ ای میل انٹر کرنا بہت ضروری ہے. ریزن بینگ, all students getting registered through this portal would be getting their logins through their shared email on their emails. تو یہاں پہ آپ نے ای میل ان کا لازمی اسٹوڈنٹس کا ورکنگ ای میل لینا ہے. ڈیٹ آف برتھ انٹر کریں گے, اور سبمٹ کا بٹن دبا دیں گے, اسٹوڈنٹ انرول ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں اسٹیٹسٹیکل پروفائلنگ کے پیج کے اوپر. اسٹیٹسٹیکل پروفائلنگ میں اگلی ہماری کیٹیگری ہے ڈیٹیلز آف پوسٹ اینڈ پوزیشنز. ڈیٹیلز آف پوسٹ اینڈ پوزیشنز کو اگر ہم کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہوگا. آپ نے باری باری اپنی رسپیکٹو ڈپارٹمنٹس کی پوسٹ, سینکشن پوسٹ اور فیلڈ پوسٹ کو فل کرنا ہے. آرٹس اینڈ آرٹس آنرز میں یہ جو ہم نے ایک ڈیمو یونیورسٹی بنائی ہے, اس میں
दो प्रोग्राम्स लिस्ट हो रहे हैं, सोशियोलॉजी फर्स्ट शिफ्ट एंड सोशियोलॉजी सेकंड शिफ्ट। अगर मैं सैंक्शन पोस्ट को 20 लेता हूं और फिल्ड पोस्ट को 12 लेता हूं तो ऑटो फिल हमारे पास वेकेंट पोस्ट आ जाएंगे। अगेन अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कैटेगरी में सोशियोलॉजी में 5 सैंक्शन पोस्ट लेता हूं, फील्ड 2 लेता हूं तो वेकेंट पोस्ट ऑटो फिल हो जाएंगी। सेम फॉर एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड फॉर प्रोफेसर्स। सबमिट के बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और कोर्स के अगेंस्ट सेव हो जाएगा। सिमिलरली आप बाकी प्रोग्राम्स का डेटा भी इसी तरह एंटर करेंगे। नाउ यू विल कम ऑन द फैकल्टी इंफॉर्मेशन। हमने डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड पोजीशंस में लिस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ सैंक्शन पोस्ट अगेंस्ट फिल पोस्ट ली। फैकल्टी इंफॉर्मेशन में हम उस इंफॉर्मेशन को, जैसा कि आपने देखा हमने पीछे जो इंफॉर्मेशन एंटर की थी, फील्ड पोस्ट हमारे पास 19 यहाँ पे उसने शो कर दी है। हम उसको बाइफरकेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मेल एंड फीमेल। अब टोटल फैकल्टी स्ट्रेंथ शो करेंगी मेल की और टोटल फैकल्टी स्ट्रेंथ आप शो करेंगे फीमेल की। Now you will enter the faculty without PhD qualification. And then you will enter faculty with PhD qualification. Again, अगर आप इसमें for example ज़्यादा का 6 लगाते हैं तो the system would give you a check that this cannot be accepted, the value should be less than or equal to male faculty strength. तो there are certain checks जो कि लगे हुए हैं यहाँ पे, there are certain formulas जो लगे हुए हैं which are basically to bring life easy for you all. आप सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे, आपका डाटा उसके अगेंस्ट अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड साइंस ऑनर्स के प्रोग्राम्स में आप अपना डाटा एंटर करेंगे और इसी तरह सबमिट कर लेंगे। इन केस आप अपना डाटा अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट डेट फैकल्टी की भी प्रोविजन आपके पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि वंस यू सबमिटेड योर फैकल्टी डाटा तो यू कैन नॉट अपडेट इट, यू कैन ऑलवेज अपडेट इट एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। Now I'll jump to the student enrollment section. Student enrollment section में आप stats देंगे। For example, science honors के ये listed programs हैं। आप 2015 के stats डालना चाहते हैं for biochemistry's first shift. Biochemistry first shift 2015 की total number of labs, if any, अगर there are certain programs जिसमें labs होती नहीं है तो you won't need to enter those labs. Biochemistry में अगर कोई labs हैं तो you'll enter the number of labs. You will enter the total number of students enrolled in biochemistry in 2015 in first shift. Total number of students passed out. And total number of students dropped out. Now comes in another very important information, total number of graduates employed this year. अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी जहाँ पे शायद यूनिवर्सिटीज़ के पास ये डिटेल्स अवेलेबल हों और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होंगी जहाँ पे शायद ये यूनिवर्सिटीज़ के पास डिटेल्स मौजूद ना हों। तो दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी फील्ड, बट येस इफ यू एंटर दिस फील्ड will help PHEC, will help the university itself to map
the rating of the students graduating from the university. Again, the students that are graduating and are employed can always help other students who are graduating from the university and would sort of create a data bank for the university and PHECs. आप सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे, आपका डेटा सबमिट हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा. अगेन इस मॉड्यूल में नंबर ऑफ इयर्स की कोई कैद नहीं है. आप पिछले 10 साल का डेटाबेस में डाल सकते हैं और जितना अच्छा और क्वालिटी का डाटा आप इसमें डालेंगे उतना ही अच्छी फीडबैक ये HEP पोर्टल आपको दे सकेगा. अपलोड इमेजेस का एक लास्ट टैब है. अपलोड इमेजेस में add new picture. You can add the picture of the main campus. You can add picture of any picture which you want to be shown on the home page needs to be added over here. उस picture add करने के there certain rules and allowed file size should be less than 10 MB. Only formats allowed are JPEG, JPG, PNG, JIF, and BMP. Basic pictorial extensions हैं. मैं आपको एक पिक्चर अपलोड भी करके दिखा देता हूं. पिक्चर ऐड हो गई है. इसी तरह आपने मजीद कुछ पिक्चर्स ऐड करनी हो तो यू कैन ऑलवेज गो टू दिस टैब एंड एंटर द पिक्चर्स. वन मोर थिंग जो कि बहुत ज़रूरी है कि हमने इन सारे वर्कफ्लोज का डाटा एंट्री ट्यूटोरियल्स भी ऐड ऑन किए हुए हैं HEP में, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई कुलीग भूल जाते हैं या स्किप कर जाती है कोई इंफॉर्मेशन माइंड से कि इस इंफॉर्मेशन को कैसे एंटर करना है या किस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाके एंटर करना है, तो यू कैन ऑलवेज come to the data entry tutorials and click on he'll just have to click on the detail of main campus और वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी. We'll just play one video for your guidance. इसी तरह आप अपने बाकी वीडियो ट्यूटोरियल्स अगर कोई देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं. Now I'll pass on the mic to Nadia for the rest of the interview. Dear participants, I hope you have been following all the steps that Hamza has been mentioning here. At the end of this training, I'd like you guys to please give us a feedback. I'm going to share feedback form, and I will highly appreciate if you enter your details and update that feedback form. Nadia, may I say something, please? I'm Dr. Asif Ranja from Islamic University, Bahawalpur. Sure, sir. If you can just give me 5 minutes, we'll be moving to question answer session. Before that, I need to explain one more thing. Okay, right.
Here's the link for the feedback form. Okay, one more thing that I wanted to address before we leave, before we move to question and answer session, actually. Rahnamai Markaz and Higher Education Portal are not the only initiatives that PHEC has taken. There's one more thing that we're working on currently and will be launching soon, is QEC. That will be part of this portal soon enough. I just want to give you an overview of how we're working and where we're going with this. Let me give you an overview of it. We have written to universities and colleges for nominating their focal person and quality assurance from their quality assurance cell that they have established in their institutes. This is the data that they will be entering in future, and you all know, since you are from universities, you all know that you do submit your IPE and self-evaluating forms to HEC. Over here, that is what we're trying to create, a digital platform so that you can all enter it over here. And instead of filling all the forms by hand and then submitting it to HEC, we will be in a better position to analyze all the information, the quality information, and where are the loopholes currently that needs to be filled after this portal will be launched. Let me show you what kind of information we're seeking in here. The university details, year of enactment, your campus details, longitudes, latitudes, number of labs, if they're certified or not, your contact information. These are the details that will be entered by your QEC focal people. And of course, this information will be used later on to enhance our NMI markers, to guide our students in a better way. These are the faculty, department-wise faculty, of course. These are the stats that will be entered here by your QEC focal people. PhD information. These are not just stats. This is the information that we'll be needing, your research information, what kind of funding you guys have, how much funding you have, what is the space for more funding. These are the research activities, currently what projects are launched in your university institute. The publications, past 3 years publications, the impact factor. So this is one aspect of what we are currently working on, since of course there will be a lot more information that that is covered in IPE forms. It'll all be made available in these forms. So this is one thing that I wanted to show you, that this is what PHEC is currently working on and will be launched soon. So now I move to question and answer session. Any questions, please go on. Okay, Assalamu alaikum, Dr. Nadia. This is Huma Fawad. I'm from High Tech University, Texila. And first, I would like to commend PHEC for this initiative. It's really something wonderful for the new prospective students to see and have a comparative analysis of where they would like to join. For the current students to basically go for the opportunity. But in my perspective, for us to basically quickly, get it done, you have to give a deadline to all the institutes. Otherwise, it would be just like something which would be done in routine. So it's better कि आप उसका एक
माइलस्टोन्स आप उसके इस्टेब्लिश कर दें कि कब तक आपको स्टूडेंट वाला चाहिए, कब तक आपको वो चाहिए, सो दैट वुड बी एक्टिवेटिंग द इंस्टीट्यूट. क्योंकि आजकल कोविड में आपको वैसे भी पता है कि things are a little slow. So having these, I mean, ये क्योंकि this is something which QC, I mean, quality department, the registrar office जो है हमारे जिनके पास admission का data होता है, student affairs, they all have to sit and collaborate and pool in that information. So in my view, deadlines, milestones should be given. You're very right, Huma. You're very right. Once you'll get your hands on this training, these forms, how you enter the information, sure, we are planning to set some milestones and get the data from the universities and get it going. Thank you so much. Any other questions? Nadia, thank you very much for details about Ranmai Markaz. But my question is very basic question that we all the focal persons actually are today here for training on Ranmai Markaz. What is going on? Hamza guided us about lot of data to be entered from these from the side of these focal persons. It will be impossible for these focal persons, I think, because आपने तो पूरी यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन मांग ली और इस पूरी यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन देना एज फोकल पर्सन मेरे लिए शायद मुमकिन नहीं होगा, बिकॉज अगर मैं एक ऐसा शख्स हूं जो आईटी से इतना ज्यादा अच्छा प्ले नहीं कर सकता, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगी. मुझे लगा कि इस ट्रेनिंग के दो पार्ट्स थे. एक तो पार्ट ये था कि हम रहनुमाई मरकज जो है, जो काउंसलिंग सेंटर्स हैं यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे हम स्टूडेंट्स को किस तरह से गाइड कर सकते हैं. वो बहुत अच्छा है. मेरा ख्याल है जितने फोकल पर्सन हैं वो एग्री करेंगे कि हम उसी मकसद के लिए आज इस ट्रेनिंग सेशन में मौजूद थे. जो दूसरा पार्ट है, फ्रैंकली स्पीकिंग, इट सीम्स आईटी एक्सपर्टीज वाले जो लोग हैं वो शायद इसको बेहतर अंदाज में कर सकते हैं. एंड वी नीड अनदर फोकल पर्सन फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट, और जो ऑलरेडी उस पर काम भी कर रहे हैं, और हर यूनिवर्सिटी का डाटा जाहिर है मौजूद है, और वो उसको बेहतर अंदाज में आप तक आपके जो फॉर्म है वो फिल करके पहुंचा सकते हैं. इस पे थोड़ा सा आप हमें रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि ये फोकल पर्सन जो हैं ये डाटा प्रोवाइड करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, या सिर्फ रहनुमाई मरकज की हद तक हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो लिमिटेड है. थैंक यू सो मच आसिफ साहब. इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बताती जाऊँ कि हमने सबसे पहले तो वीडियो ट्यूटोरियल्स इसीलिए एंटर किए हैं कि लेट्स सपोज अगर आप आईटी इनेबल्ड नहीं हैं तो डेफिनेटली आप किसी और को भी कह सकते हैं, अपने आईटी डिपार्टमेंट को भी कह सकते हैं, और वहाँ से उनकी मदद से एंटर करवा सकते हैं. और क्योंकि पूरे ट्यूटोरियल्स हमने डिटेल में भी दिए हैं अदर देन दिस ट्रेनिंग, कि कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है आपको तो गाइड हो जाएगा. ऑफ कोर्स हमें डाटा चाहिए होगा, उसके बगैर हम नहीं रिफ्लेक्ट करा सकते. रहनुमाई मरकज किसी काम का नहीं होगा अगर हम उसके अंदर डेटा HEP में नहीं एंटर करते. हमें प्रोग्राम्स का डेटा चाहिए, हमें स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, वो सब रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी यूनिवर्सिटी का. तो डेफिनेटली आप लोगों की तरफ से ये कोऑपरेशन हमें चाहिए होगी. उसके अलावा आप ये कह रहे हैं कि अगर TDS हो जाता है, TDS नहीं होगा, डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली हम आपको टाइम देंगे. आप लोगों के अपने डैशबोर्ड्स होंगे, और हम भी अंडरस्टैंड करते हैं ये डेटा डेफिनेटली है तो सबके पास, लेकिन एंटर करने में जितना भी टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको टाइम मिल जाएगा. नादिया, 35,000 स्टूडेंट्स, IUB के 35,000 स्टूडेंट्स हैं. अब इमेजिन करें कि कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट का डाटा फीड करते हुए, सिर्फ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें. जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक, और दिस इज वेरी रेलेवेंट, और दिस इज गोना हेल्प अस टू मेक दिस पोर्टल बेटर एंड बेटर डे बाय डे एज वेल. आप लोगों की जिंदगी आसान करने के लिए वी डिजाइंड इंपोर्ट फीचर एज वेल. बहुत सी यूनिवर्सिटीज के अपने पोर्टल्स भी चल रहे हैं जिन पे वो अपने स्टूडेंट्स का डाटा एंटर कर रहे होते हैं. इसमें हमने एक इंपोर्ट फीचर के साथ अपने डेटाबेस के रिस्पेक्टिव डेटाबेस टेलर्ड एक्सेल फॉर्मेट, डाउनलोडेबल फॉर्मेट लिंक किया होगा, जो कि आपके आईटी पर्सन्स उसको डाउनलोड करेंगे और अपने पोर्टल की इंफॉर्मेशन उस एक्सेल फॉर्मेट के ऊपर शेयर कर लेंगे, एंटर कर देंगे, सिंपल कॉपी पेस्ट, सिलेक्ट ऑल, कॉपी,
उस फॉर्मेट के ऊपर और वहां से बैकएंड से उसको क्वेरी चला के वो अपलोड कर देंगे. So this import feature is also built in this system. Yes, we do understand that this will be like a lengthy exercise. आप जितने participants हैं हम लोग बिल्कुल ये expect नहीं कर रहे कि you yourself would be entering the details. You will be acting as the master trainers to train your respective IT persons. हर department के हर university के हर department में IT persons available हैं. तो आप लोग जो है मास्टर ट्रेनर्स के तौर पे एक्ट कर रहे होंगे अपनी यूनिवर्सिटी के तमाम डिपार्टमेंट्स की. एक दिन आईटी जो लोग हैं उनकी आप एक ट्रेनिंग करवा लें ऑन हाउ टू एंटर द डिटेल्स, उनको ट्यूटोरियल्स से गो थ्रू करवा दें. और आपके साथ ये शेयर करने का भी मेन मकसद ये था कि यू बीइंग सीनियर पीपल ऑफ योर यूनिवर्सिटी यू डू रियलाइज के जितना ज्यादा डाटा इसके अंदर आएगा उतना बेहतर ये फीचर परफॉर्म करेगा. इसमें अगर हम सिर्फ 1 साल का डाटा डाल देंगे तो हमें उस तरह के रिजल्ट्स शो नहीं होंगे. प्लस जितना आप इसमें जैसे डाटा डालेंगे इट्स नॉट ओनली गोना हेल्प PHEC टू टेक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस और मैप एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स. इट्स गोना हेल्प द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ टू मैप स्टूडेंट टीचर रेशियो. आई एम जस्ट टॉकिंग ओवर द टॉप ऑफ माय हेड. स्टूडेंट टीचर रेशियो आप लोग देख सकते होंगे एंड वाइबिलिटी अपनी यूनिवर्सिटी की देख सकते होंगे. You can create an alumni of graduate students who have been employed in your system. जी हमजा, थैंक यू वेरी मच. मैं नादिया अगर आप इजाज़त दें तो मेरी एक सजेशन है, बाकी लोग भी ज़ाहिर है बात करना चाहेंगे. मेरी सजेशन ये है कि जिस तरह से आज हमारा ये ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें हमने लर्न की हैं, अगर एक ऐसा सेशन और रख लिया जाए, चाहे आप ऑनलाइन रख लें या ये भी पॉसिबल है कि हम अपने आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं, हर यूनिवर्सिटी का एक आईटी एक्सपर्ट, उसके साथ आपका, हमजा का और आप लोगों का एक सेशन हो जाए. या ये भी पॉसिबल है कि यूनिवर्सिटीज़ को अगर लिख दिया जाए तो उनका डायरेक्टर आईटी जो है वो वहाँ लाहौर में भी आ सकते हैं. एक फिजिकल सेटिंग वहाँ डिस्टेंस SOPs को फॉलो करते हुए एक ऐसा सेशन हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसकी इंपॉर्टेंस पे आप एम्फसाइज कर रहे हैं और यकीनी तौर पे हम भी इसको रियलाइज करते हैं. तो अगर हर स्टूडेंट को हमने सिस्टम के अंदर लाना है तो मेरा ख्याल है कि हमें आईटी वालों को फुल फ्लेज इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा. जी बिल्कुल. अच्छा सब उसके लिए कि हम लोग बैचेस में ट्रेनिंग कर रहे हैं. आप लोग अभी सिर्फ 44 लोग हैं जो इनवाइटेड हैं, 45 लोग हैं जो इनवाइटेड हैं फॉर दिस ट्रेनिंग. उसके बाद के सेशंस भी होंगे, हम उसमें डेफिनेटली आप लोगों को भी सेंड कर देंगे इन्फॉर्मेशन. जब भी सेशन हो रहा होगा आप डेफिनेटली जिसको भी नॉमिनेट करना चाहेंगे फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट दे कैन अटेंड द सेशन. और उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इसकी ट्रेनिंग ये सेशन भी अवेलेबल होगा आपका यूट्यूब के ऊपर, हमारे PHEC के चैनल के ऊपर अवेलेबल होगा. और उसके अलावा ट्रेनिंग वीडियोस भी अवेलेबल हैं, ट्यूटोरियल्स इसी HEP के वेबसाइट के अंदर. थैंक यू. The question जी, chat box में question है जी कि can I get the recording of this meeting because जी sure you can. You'll be finding that recording on YouTube channel of PHEC. जी अस्सलाम वालेकुम. जी sure. डॉक्टर शफाक फ्रॉम जिसी यूनिवर्सिटी सियालकोट से. मैम मैंने पूछना था कि अभी फिलहाल जो आपने कहा कि हमने ये डाटा एंटर करना है, ये आफ्टर लॉगिन जब आप प्रोवाइड करेंगे उसके बाद ही हमें एक्सेस होगी ना? जी बिल्कुल. ये तो आप लोगों ने एक डमी यूनिवर्सिटी क्रिएट की है. जी ये तो गेस्ट लॉगिन के साथ आप लोगों को एक ट्रेनिंग दे दी गई है. आप इसके ऊपर एंटर करके देख लें किस तरह एंटर करना है. आप जितना भी यूज टू होना चाहते हैं लॉगिन से कर सकते हैं. उसके बाद आप लोगों के अपने डैशबोर्ड्स, आप लोगों के अपने लॉगिन सेंड कर दिए जाएंगे. हर एक का अपना यूनिवर्सिटी का अलग लॉगिन बना है, अलग डैशबोर्ड बना है, जहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे रिस्पेक्टिव, वो आप लोगों को ईमेल में आ जाएगी. बिल्कुल ठीक है. एक और इसी से रिलेटेड कि हमारा जो QC डिपार्टमेंट है उनके कुछ रेलिवेंट पर्सन जो उनसे आप लोगों के साथ अटैच्ड है और इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने एक्सेल फॉर्म में भी उनसे पहले ली हुई है. आई थिंक सो कि पहले आप लोगों ने ये डिमांड की थी और उन्होंने सेंड भी की है. तो क्या वो अवेलेबल होगी ऑलरेडी या हमें जीरो से स्टार्ट करना, मतलब ईच एंड एवरीथिंग ब्लैंक पेपर से स्टार्ट करना हमने?
موہد اس کے لیے جیسے ابھی آپ کو حمزہ نے بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس آلریڈی انفارمیشن کہیں پہ پائلڈ اپ ہے, کہیں اگر ڈیجیٹل فارم میں ہے, دیٹ ول بی گریٹ. آپ اس کو امپورٹ کا فیچر سون انف دیٹ ول بی میک اویلیبل آن دا ویب سائٹ. آپ اس کو یوز کرتے ہوئے وہ انفارمیشن امپورٹ کرا لیں, دیٹ ول بی کوئک. جلدی آپ کا ڈیٹا آ بھی جائے گا اور اپڈیٹ بھی ہو جائے گا. اوکے, میرا کوشچن یہ تھا کہ شاید آپ لوگوں نے وہ والا انٹر کر لیا ہو پہلے, کیونکہ آپ لوگوں نے وہ ڈیمانڈ کیا ہوا تھا نا لاسٹ آئی تھنک سو کہ کچھ سالوں کا ڈیٹا آپ لوگوں نے ریکوائر کیا تھا. تو میرا خیال یہ تھا کہ شاید وہ آلریڈی انٹرڈ ہوگا. مطلب جو ہائر ایجوکیشن پورٹل میں انفارمیشن آ رہی ہے یہ پرٹیکولرلی آپ کے رہنمائی مرکز کو ڈرائیو کرنے کے لیے آ رہی ہے. جو بھی انفارمیشن آپ ہائر ایجوکیشن پورٹل میں کریں گے یہ رہنمائی مرکز کو ڈرائیو کرنے کے لیے آ رہی ہے. جو کیو ای سی کا ڈیٹا ہے وہ تو بہت ایکسپینسو ڈیٹا ہے جو چاہیے ہوتا ہے, جو آپ لوگ ایچ ای سی کو بھی بھیجتے ہیں فار یور کوالٹی, وہ اس پرسپیکٹو سے ہوتا ہے. اور وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کے لیے ایک پورٹل پریپیئر ہو رہا ہے, اس کے اندر انفارمیشن آ جائے کرے گی in future. Lekin for now, you'll have to enter all the data in this HEP portal so that we can run Rehnamai Markaz in a better way. Thank you. Okay, thank you so much. Nadia, this is Dr. Ehsan from University of Education. I have a few questions. Number one, like all universities, we have our data on UMS where students' data and faculty data is available. I'm not sure if that UMS system is compatible with your system when it comes to import. So that is not just Excel files, that could be like system UMS context that could be slightly different. So maybe like Asif Randir Sahab has suggested, one meeting with IT people I think would be very beneficial. So if that could be a meeting like this one online, and we can all sit together, IT people too, and they can see how compatible our data, our system is with your system. Number two, is there any helpline that you have created? Like when we are doing our work, if there is anything that we want to ask and we need immediate response, is there any helpline that you have created? And number three, in one of the information that you wanted was about campuses and affiliated colleges. We have, for example, University of Education has 9 campuses and we have around 60 affiliated colleges. About affiliated colleges, you wanted number of colleges and also all details about affiliated colleges. So there I was a little bit confused, if you could clarify that. Yeah, I'm over with my questions. जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर साहब, जहाँ तक आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात है, एफिलिएटेड कॉलेजेस के सिर्फ नाम हमें चाहिए होंगे, दैट्स इट, और कोई एफिलिएटेड कॉलेजेस की और कोई डिटेल नहीं चाहिए. वन थिंग. जहाँ तक आपके सब कैंपसेस की बात है, यू गॉट अराउंड 8 आई बिलीव सब कैंपसेस, अभी आपने शेयर भी किया, वो सारे सब कैंपसेस भी HEP के अंदर एंटर्ड हैं, और each सब कैंपस हैज इट्स ओन लॉगिन एंड डैशबोर्ड. लिहाजा वो हर सब कैंपस इंडिविजुअली अपने स्टूडेंट्स का डाटा एंटर कर रहा होगा. thirdly, जैसा कि आपने कहा कि ये आप लोगों के यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का अपना एक मैनेजमेंट सिस्टम होगा स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग डाटा एंटर कर रहे होंगे, हम बिल्कुल उसको आपके अगर IT पर्सन जो हैं वो I'll just transfer the thing, I'll just for this particular question I'll request Rashid, who's our developer, he'll be answering this question. डाटा एक्सपोर्ट करेंगे और हम एक फीचर देंगे और एक पेज होगा जिस पे जाके आप एक्सेल फाइल को अपलोड कर सकते हैं गिवन फॉर्मेट में, जो कि ऑटोमेटिकली चाहे वो 1 लाख हों 2 लाख हों, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो क्लास बाय क्लास जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं हमारे पोर्टल पे. प्लस आपकी जो ट्रेनिंग वाला एक क्वेश्चन था कि IT पर्सन्स की अगर हम पर्सन ट्रेनिंग कर सकते हो. I'm sorry, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, it is breaking up. Is it better now? Yeah, it is better now. जहाँ तक डॉक्टर साहब आपकी बात है IT पर्सन्स को ट्रेन करने की, वो आपकी सजेशन बिल्कुल वैलिड है, और ये सजेशन हमारे बहुत सारे कलीग्स ने और भी दी है. तो we can just request PHEC to arrange one session for IT persons as well. वो बिल्कुल किया जा सकता है. और lastly, I'll be sharing my number.
and one of my team members number. अगर आपको while working on it, you can along with the support email as well. While working, अगर आपने मुझे, you can reach out to me over my cell phone 24/7. Query आती है if you find that a university is offering a certain program but it's not entered in the dashboard. You can always send an email to the support email mentioning the name of the program which needs to be added or which needs to be deleted from your dashboard. Thank you very much. Thanks a lot. Please, any other questions? Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। जी मैं डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक बात कर रहा हूँ, MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान। अच्छा सर, मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि हमने इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उनकी डिटेल देनी है या इनकी पूरे पार्टिकुलर्स भी देने हैं, कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देने हैं, या पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा जो है, अगर इनकी स्टूडेंट के पर्टिकुलर्स देने हैं तो उसमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ना वो रिक्वायर होगी? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दोनों चीज़ें देनी है। अच्छा, अब इसकी मैं आपको डिटेल्स समझा देता हूं कि हमारे पास दो स्टूडेंट्स से रिलेटेड हमारे पास दो मॉड्यूल्स हैं। वन इज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड द अदर वन इज स्टूडेंट इनरोलमेंट। किसी भी यूनिवर्सिटी में एक्टिव स्टूडेंट्स 4 साल के होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का जो मॉड्यूल होगा उसमें आपने सारी डिटेल्स देनी है। हमने HEP में पंजाब के जितने बोर्ड्स हैं उनका सारों बोर्ड्स का डाटा अप टू डेट के अंदर अवेलेबल है। उसमें अगर आप स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका CNIC, उसका पासिंग आउट ईयर, उसका इंटर का ईयर और सेशन एनुअल है या सप्लीमेंट्री, ये 4 चीजें सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोफिल, सारी फील्ड्स ऑटोफिल हो जाएंगी। 1 या 2 फील्ड्स रह जाएंगी, उनको आप ऑटोफिल खुद से कर लेंगे। ये आपका उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पंजाब के बोर्ड से मैट्रिक को इंटर किया है। अब हम आ जाते हैं दूसरे सिनेरियो के ऊपर कि अगर कोई स्टूडेंट पंजाब से जिसने मैट्रिक या इंटर नहीं किया वो हमारे पास यूनिवर्सिटी में आता है, तो उसको हम कैसे रजिस्टर करेंगे? उसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्विक इनरोलमेंट की ऑप्शन मौजूद है। क्विक इनरोलमेंट में हार्डली अदर बोर्ड की ऑप्शन भी अवेलेबल है और क्विक रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन भी अवेलेबल है। क्विक रजिस्ट्रेशन में टोटल 4 फील्ड्स आप एंटर करेंगे, 4 से 5 जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट का ईमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी, क्योंकि यहाँ पे जो ईमेल एंटर करेंगे इस ईमेल के ऊपर उसको रहनुमाई मरकज के लॉगिन और पासवर्ड सेंड किए जाएंगे। इसलिए उसका ईमेल एंटर होना, उसका रोल नंबर एंटर होना, उसका नाम, ये 4 से 5 डिटेल्स होंगी जो आप एंटर करेंगे और स्टूडेंट रजिस्टर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू स्टेटिस्टिकल प्रोफाइल। स्टेटिस्टिकल प्रोफाइल इज समथिंग जहाँ पे सिर्फ आपने नंबर्स देने हैं। 4 साल के तो स्टूडेंट्स आपने एंटर किए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से, तो 4 साल के तो नंबर्स ऑटोमेटिकली स्टूडेंट एनरोलमेंट में आ जाएंगे। 4 साल से पीछे के जो साल हैं उनके जब आपने फैक्ट्स देने हैं तो वहां पे आप 2015, 2014, 2013 एंटर करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली मेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट्स की तादाद एंटर करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। दैट इज ओनली एंटरिंग नंबर्स, नो डिटेल्स रिक्वायर्ड। एक्टिव स्टूडेंट्स के केस में डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी, वो भी हमने कोशिश की है कि जितना कम से कम यूनिवर्सिटीज को काम करना पड़े वो करें। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। एक चीज इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारे एनरोलमेंट होती है और उसमें जैसे हमारा डीन ऑफिस इसको देख रहा होता है ओवरऑल, और वो एक एक्सेल शीट लिस्ट बना लेते हैं कि ये स्टूडेंट्स इसमें एनरोल हुए हैं, हम वो ऐसा कोई शीट उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपको? जी डॉक्टर साहब, sorry, can we just keep it one by one? जी डॉक्टर साहब, ऐसा ही है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि आप लोगों की बहुत सी यूनिवर्सिटीज के पास ऑलरेडी डेटाबेसेस में स्टूडेंट्स का डाटा अवेलेबल होगा। वो
डेटा बेस जैसा भी हो उसमें एक एक्सपोर्ट की ऑप्शन होती है जो डेटा बेस से डेटा को एक्सेल की फॉर्म में एक्सपोर्ट कर लेता है. हम आपको अपने डेटा बेस कंपेटेबल एक एक्सेल की फॉर्मेट डाउनलोडेबल देंगे जो HEP में ऑलरेडी आप क्लिक करेंगे वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा. आपके IT प्रोफेशन जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे फॉर्म को खोलेंगे, आपके फॉर्म को खोलेंगे, सिंपल जो फील्ड्स होंगी वो कॉपी पेस्ट करेंगे और हमारे फॉर्म को अपलोड करवा देंगे. आपका बेशक उस फॉर्म में 2 लाख का स्टूडेंट्स का डाटा हो या 4 लाख स्टूडेंट्स का डाटा हो, वो ऑटो अपलोड हो जाएगा. ये फीचर अवेलेबल है और जब लॉगिन्स आपको दिए जाएंगे तो ये फीचर उसमें incorporated होगा. Could I ask a question, please? जी, please. When it comes to metric and FSC details, all those details that you require, they may not be there in our UMS. So, for example, if we have to, put the email address of a student, that has to be done manually, which means in our case, maybe 25,000, in some other universities' cases, maybe 30,000, the data needs to be entered manually then. So, is it possible that if students are also logging in, you're giving login to students too, if students log in and they enter their data over there, तो I think ये काम जल्दी भी हो जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा hassle भी नहीं होगी. Do you think this is possible? Why we asked for the focal person was the responsibility factor. Student क्या enter करता है, क्या नहीं enter करता, हम उसको assure नहीं कर सकते. लेकिन जो भी information आप लोगों के through आ रही होगी, definitely वो certified information होगी. इसलिए हम आप लोगों का नॉमिनेशन हमने आप लोगों के कलेक्ट किए थे. डॉक्टर साहब, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी का भी एक फीचर है जिसको हमें इंश्योर करना है क्योंकि स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर्स, उनके ईमेल्स और प्लस एक और अभी हमारे पास क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी आया है कि all the entered data, will this be available to the general public? A hard no, a capital no. This will not be visible to PITB even. Because of confidentiality, the data that you would be entering will only be visible to the respective university and PHEC. That's it. Nobody else would have access to the data and nobody else would be viewing the data. Nadia, I think we'll be talking to each other a lot in the next couple of months. Sure. There's so many things, so many questions. I mean, अभी हमने सिर्फ अभी एक घंटे की presentation के बाद इतने ही सारे questions आ रहे हैं. But I think there'll be a lot to discuss, a lot to talk, a lot to settle down. So inshallah, we'll start working as per the requirements, but there'll be hiccups, I believe. Dr. Saab will be available 24/7. No worries. आप कभी भी call कर सकते हैं. Thank you very much. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. जी, वालेकुम सलाम. I am Shafkat from Bahriya University Lahore campus. I have a question कि क्या ये जो focal person है ये is a single from each university या ये हर campus का एक है? अगर एक campus ये यूनिवर्सिटी से एक है तो बाकी कैंपस से लाइजन करके डाटा लेके फिर सारा वो इसी तरीके से अपलोड करना होगा या ये हर कैंपस को सेपरेट रिस्पांसिबिलिटी दी गई है? डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हमने तो फोकल पर्सन एक इंस्टीट्यूट से मांगा था. आपके फर्दर कैंपसेस में आप लोग जिस तरीके से भी उसको हैंडल करना चाहते हैं, आपने जो नॉमिनेशन हमें भेजा था, हमारा कांटेक्ट आपके साथ होगा. How you get the information, how you enter information, if you want other resources from your university campus to add information on your behalf, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली आपकी होगी और हम आप ही के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे. लेकिन जिस तरह आप हैंडल करना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू. ओके, राइट, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. जी, अस्सलाम वालेकुम. जी, मैं राजिया बात कर रही हूँ यूवास लाहौर से. मेरा ये क्वेश्चन था कि जब स्टूडेंट्स का डाटा हमने एंटर करना है और वो आप बता रहे हैं कि पंजाब के बोर्ड्स के साथ उसकी अटैचमेंट है, तो क्या जो हम बच्चों के अब मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाते हैं वो फिर हमारे लिए इजी नहीं हो जाएगा क्योंकि वो डाटा तो मैच कर रहा होगा, वेरिफिकेशन फिर पॉसिबल ना भी हो तब भी ठीक है? राजी, इन फ्यूचर में भी हम इस पे काम करें, लेकिन फिलहाल हमारा ये फोकस नहीं है. फिलहाल हमारा फोकस रहनुमाई मरकज़ है, स्टूडेंट की गाइडेंस है, उनके लिए आसानी पैदा करना है. हाँ, लेकिन फ्यूचर में भी हम इसको फर्दर डेवलप करें, उस फीचर को भी बीच में ऐड करें. नाइस सजेशन. थैंक यू.
Assalamualaikum. जी अस्सलाम वालेकुम. Myself is Dr. Najma Iqbal Malik from University of Sargodha. Ma'am, I want to ask a question कि जो आप लोगों ने IT डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट को एज अ रिसोर्स पर्सन लिया है यहाँ पे एज अ जो आपके नॉमिनी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हैं इस पोर्टल को अपडेट करने के लिए जो आपका साइड बाय साइड दूसरा चल रहा है QEC के प्लेटफॉर्म से, क्या उसकी लिस्ट आप शेयर कर सकते हैं? बिकॉज आई बिलीव कि जो पिछला क्वेश्चन हुआ था मैं उसी से रिलेट करना चाहूँगी. आई थिंक फ्रॉम एवरी कैंपस जो आपने यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट किया है वहाँ से सिंगल रिसोर्स पर्सन के तौर पे हम लोग ही आए हैं. अगर कोई डिफरेंट है और हर कैंपस का अलग है, हमने मैनेज करना है, तो आई वांट टू नो कि और कितने लोगों की नॉमिनेशन आपके पास आई है डिफरेंट एस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल फ्रॉम QEC. अभी तक हर यूनिवर्सिटी से हमारे पास एक ही नॉमिनेशन आई है. Definitely list हम I'm not sure if there's an confidentiality factor into it. लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर अगर आप इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर दी जाएगी. और कोई पर्सन तो नहीं है. हाँ, क्योंकि फिर वो हमारे लिए इजी हो जाएगा इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट विद अदर पर्सन, और ताकि हम इस चीज़ को ना साइमल्टेनियसली दोनों प्लेटफॉर्म्स पे इकट्ठे करा सकें. एनी अदर क्वेश्चन जी? यस प्लीज. इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है. कुछ एक सर ने पहले ये कहा था कि दे हैव सर्टेन सब कैंपसेस. वी आल्सो हैव गवर्नमेंट कैंपसेस, लेकिन इससे पहले हमारे एक्स-पीपीपी कैंपसेस थे जो कि अब तो क्लोजर हो चुका है. अगर आप ये कहते हैं कि हमें पिछले सालों का डाटा भी डालना है, दे हैव बीन क्लोज्ड डाउन इन 2017, तो क्या हमें उनका डाटा भी देना पड़ेगा? और क्योंकि अगर उनका डाटा देना है तो आप वहाँ से तो कोई अब फोकल पर्सन नहीं आ सकता. फोकल पर्सन डेफिनेटली वी विल बी अवेलेबल और फ्रॉम द QEC पर्सन फ्रॉम आवर ब्रांच और आवर कैंपस, तो उन्हीं को वो डाटा गैदर करना है. यस प्लीज. अच्छा मैम, करंटली वी डोंट नीड दैट डेटा. ओके फाइन. लेकिन हम एक्टिव कैंपसेस जितने भी आपके हैं अब उसके डेटा हम लोगों को चाहिए होगा आपका. ओके ठीक है. थैंक यू मैडम. अस्सलाम वालेकुम मैम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. I am Dr. Harith from Kostar University, Murray. Ma'am, as you know, Kostar is a new established university and currently we don't have any class and we are applying for NOC. तो आपसे पूछना ये था कि हमारे जितना भी टीचिंग स्टाफ है वो कॉलेज से दे आर ऑन डेपुटेशन फॉर 3 years. अब उनको नहीं पता कि इन फ्यूचर वो यहाँ रहते हैं नहीं रहते. अब हमने क्या करना है, इनका डाटा एंटर करना है एटलीस्ट टीचिंग स्टाफ का, और स्टूडेंट्स के हवाले से भी गाइडलाइन दे दें क्योंकि बहुत से कॉलेजेस से यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट हुई हैं. रावलपिंडी यूनिवर्सिटी है, इसी तरह चकवाल में, मियाँवाली में. तो हम लोग अपने टीचर्स का डाटा एंटर करें, वो दे आर ऑन डेपुटेशन. साहब जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन. और डॉक्टर साहब बिल्कुल हमें आइडिया है कोसार यूनिवर्सिटी इज न्यू यूनिवर्सिटी और आप लोगों की अभी लैंड रिक्वायरमेंट और वो सारे प्रोसेस चल रहे हैं. और यस, आपकी जो फैकल्टी डेपुटेशन पे भी है वो उनका डाटा आप ज़रूर एंटर करें. रीज़न बीइंग कि हमने इसमें कोई हार्ड कोड नहीं किया. अपडेट फैकल्टी की ऑप्शन, एडिट फैकल्टी की ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होगी. 3 साल बाद अगर वो चले जाते हैं या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 years कोई ऊपर नीचे फैकल्टी में होता है, कोई 2 PhDs मजीद इंक्रीज हो जाते हैं, तो यू विल बी एबल टू एंटर दोज डिटेल्स एज वेल. और जहाँ तक आपकी क्वेश्चन है कि कुछ कैंपसेस को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया दिया गया है, वो सारा अपडेटेड डाटा हमारे पोर्टल में मौजूद है. चकवाल यूनिवर्सिटी को एज यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल एंटर किया गया है. एज यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल जो वो प्रोग्राम्स करवा रहे हैं वही प्रोग्राम्स उनके रजिस्टर्ड हैं. एंड सेम गोज फॉर कोसार यूनिवर्सिटी. एंड बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी इज वन मोर यूनिवर्सिटी जो कि अभी अंडर एस्टेब्लिशमेंट है. एक्ट वगैरह पास हो गया है और चीज़ें अभी उनकी चल रही हैं. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. ओके राइट सर. वन मोर थिंग कि हमारा कुछ स्टाफ है, दे हैव जस्ट मास्टर डिग्री होल्डर, तो उनका भी हम डाटा एंटर करें. जी, उनका डाटा आप नॉन PhD स्टाफ में एंटर करेंगे. राइट. थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम. सर प्लीज आप जो भी यहाँ पे स्पोक्स पर्सन हैं, प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जिस तरह पहले क्वेश्चन हुआ कि हमें हेल्प मिलती रहे, हम अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो इजी रहे.
جی سب کے لیے ہے یہ کہ ہمارے پاس آپ سب کے کانٹیکٹ نمبرز اویلیبل ہیں. ویل بی میکنگ اے واٹس ایپ گروپ, اور کسی کو بھی کوئی ریئل ٹائم کوئری آتی ہے تو وہ ہی کین جسٹ پوسٹ اٹ آن دا واٹس ایپ گروپ. ون تھنگ, ویل آلسو بی شیئرنگ دا سپورٹ ای میل فار دس پرپز. اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں, اچھا سپورٹ ای میل کے لیے سب سے پہلا کام جب آپ کو لاگ انس ملیں تو آپ نے اپنی یونیورسٹی کے لسٹڈ پروگرامز کو دیکھنا ہے, اور ان کیس اگر کوئی پروگرام زیادہ ایڈ ہو گیا ہوا ہے یا کوئی پروگرام ایڈڈ نہیں ہے تو آپ سپورٹ ای میل کے اوپر, واٹس ایپ گروپ کے اوپر آپ ہمیں سینڈ کر دیجیے گا کہ دس پروگرام فار دس یونیورسٹی از ناٹ انٹرڈ, پلیز کائنڈلی انٹر اٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ ویل ٹرائی ٹو رسپونڈ ٹو یو ایٹ آور ارلیسٹ, اور آئی ول بی شیئرنگ support email as well in the chat box. میں تمام کولیگز سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنے پاس سیو کر لیں, اور کوئی بھی کوئری ہو تو واٹس ایپ گروپ اور اس ای میل کے اوپر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. ایک کوئک کویسچن ہے میرا. ایشو یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری ڈیٹیلز ہمیں انٹر کرنے کا بولا ہے, مگر ایچ ای سی کو اس کی اونرشپ بھی لینی پڑے گی ان فارم کہ ہماری یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو آپ اس طرح کی کوئی کورسپونڈنس ضرور کریں کہ آپ نے ہم سے یہ ریکوائر کیا ہے, تاکہ وہ لوگ بھی لوپ میں ہوں, وہ انہیں پتہ ہو کہ یہ کام کرنا ہے اور انہیں ریسورس بھی الوکیٹ کرنا ہے اس کام کے لیے. رضوان صاحب, کین آئی آسک آپ کس یونیورسٹی کو پلیز ریپرزینٹ کر میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے ہوں. سر ڈیفینیٹلی دے آر آن بورڈ. ہم نے ڈیفینیٹلی اس سارے پروجیکٹ کے اوپر آپ کے رجسٹرارز وی سیز آن بورڈ ہیں, اور پی ایچ ای سی ہی کا انیشیٹو ہے, پی ایچ ای سی ہی کی اونرشپ ہے اس کے اوپر. آپ جو بھی انفارمیشن ہمیں دے رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی وہ آپ ہی کے اسٹوڈنٹس کے لیے, آپ ہی کی یونیورسٹیز کی بیٹرمنٹ کے لیے یوز ہو رہی ہوگی. تو دیٹ از ناٹ این ایشو, اونرشپ تو ڈیفینیٹلی پی ایچ ای سی کی ہوگی. اور بالکل جی آپ کے رجسٹرارز اور وی سیز آن بورڈ ہیں. ود دس کوشچن میں ریپ اپ کروں گی اس سارے سیشن کو. آپ لوگوں کے پاس سپورٹ کا ای میل آ چکا ہے. آپ لوگوں کو جب اپنے ای میل پرٹیکولر مل جائیں گے پرٹیکولرس, تو ڈیفینیٹلی آئی لائک یو ٹو enter the details, start entering the details. One thing that I like is کہ پلیز اپنا میں نے جو فارم کا لنک بھیجا ہے فیڈ بیک فارم, آپ پلیز اس کو ضرور انٹر کر دیجیے. ہمیں بہتر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. نیکسٹ بیچ جو بھی ہم ٹریننگ کا بنانے لگے ہیں اس کے اندر ہم کون سی چیز بہتر کر سکتے ہیں, کون سی نہیں, آپ لوگوں کی فیڈ بیک میٹر کرتی ہے. تھینک یو سو مچ جی.